इति एवमेव अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्य वक्ता वर्तते डॉक्टर के सौम्य सुधा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस. आई वेलकम टू यू मैडम. एवमेव विश्वविद्यालयस्य डॉक्टर्स डॉक्टर बालदत्तात्रेय एंड श्वेता मैडम भवतां सहयोगेन एतेषां स्वागतं कुर्मः. एवमेव अस्यां सभायाम् उपविष्टाः ये वर्तन्ते छात्राः अध्यापकाः विशिष्य वैद्यविभागात् आगताः ये जनाः तेषां सर्वेषां कृते अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि. अधुना कार्यक्रमस्य प्रारम्भः तत्र वैदिकप्रार्थनया क्रियते. सम्प्रति वैदिकछात्राः आगत्य वैदिकप्रार्थनां कुर्वन्ति. सर्वे कृपया उत्तिष्ठन्तु. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. कश्यपश्यत्रायुषं जमदग्नेस्त्र्यायुषं यद्देवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तुस्त्र्यायुषं येन धाता बृहस्पतिरिन्द्रस्य चायुषे वापत तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवतवे जीवनाय दीर्घायत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय चासा अथो जीवः शरदः शतं. हरिः ओम. धन्यवादाः. अधुना दीपप्रज्वालनं कृत्वा कार्यक्रमस्य प्रारम्भः क्रियते. मंचस्थ अतिथीन् सर्वान् अहं सम्प्रार्थये कृपया दीपप्रज्वालनं कृत्वा कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्वन्तु इति. अद्य वर्ल्ड एड्स डे अस्ति. अतः यत् सिंबल वर्तते वर्ल्ड एड्स डे इत्यस्य तस्य स्थापनं तत्र क्रियते. अस्माकं एनएसएस वालंटियर डॉक्टर रामांजनेयुलु सर, डिप्यूटी सिविल सर्जन, प्लीज वेलकम टू द डायस सर. डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, they came from the Sri Venkateswara Medical College. Please give big hand. अधुना एनएसएस गीतं यदस्ति तस्य गीतस्य तत्र गानं भवति. आगच्छति अस्माकं एनएसएस वालंटियर प्रियं वद. उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे,
स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठे गजग हमारा संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदा उदा समर्थ बाल वृद्ध और नारी आ रहे सदा, हरे भरे वनों की शाल ओढ़ती रहे धरा। तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की। भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। धन्यवादाः। नाट् मी बट् यू इति ध्येयवाक्यमस्ति NSS इत्यस्य। अतः राष्ट्रियसेवा एव अस्माकं प्रथमं कर्तव्यं वर्तते। धन्यवादाः। अधुना मञ्चस्थस्थितानाम् एवं सभायामस्याम् उपस्थितानां सर्वेषामपि स्वागतं कर्तुम् आगच्छति विश्वविद्यालयस्य अस्य शिक्षाविभागस्य अध्यापिका डॉक्टर एस् वैष्णवी, एवमेव यूनिट् 5 इत्यस्य प्रोग्राम् आफीसर् अपि वर्तते। सभायै नमः। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। अद्य तावत् अन्ताराष्ट्रीय एड्स् दिवसः इत्यस्य आचरणम् अस्माभिः क्रियते। अतः विश्वविद्यालय अनेन अस्य दिवसस्य आचरणं SV मेडिकल् कालेज् इति संस्थया सह क्रियते। अत्र उपस्थिताः सन्ति अस्य राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, आचार्याः, महान्तः कवयः, आशुकवयः, आचार्याः GSR कृष्णमूर्तिमहोदयाः। तेभ्यः हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तथा च पुष्पगुच्छैः सम्माननं करोमि। सर VC सर, अस्माकं NSS वालण्टियर्स् सन्ति एताः। तथैव अत्र उपस्थिताः सन्ति अस्माकं NSS इति योजनायाः कोआर्डिनेटर् महोदयः। अस्माकं गणितविभागस्य आचार्याः सन्ति डॉक्टर के चन्दुलाल महोदयाः। तेभ्यः अपि हार्दं हार्दं स्वागतं व्याह्रियते पुष्पगुच्छैः। अद्यतनकार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः भवन्ति डॉक्टर के सौम्यसुधा महोदयाः। एताः सहायकाध्यापकाः अध्यापिकाः अस्ति डिपार्ट्मेण्ट् आफ् कम्युनिटी मेडिसिन् अस्माकं SV मेडिकल् कालेज् मध्ये तिरुपतौ। अपि च एताः नेल्लूर् मध्येपि कार्यं कुर्वती अस्ति, नेल्लूर् मेडिकल् कालेज् मध्ये। एतासां तावत् 10 वर्षाणाम् अनुभवः अस्ति। सामुदायिकचिकित्साक्षेत्रे एताः अत्यन्तं निपुणाः सन्ति। अपि च एतासां 10 वर्षात्मकः अनुभवः वर्तते। अपि च एताभिः
स्वस्नातकोत्तर उपाधिः गुण्टूर् महाविद्यालये चिकित्सा महाविद्यालये प्राप्तम् अनन्तरं 2014 तमे वर्षे एताभिः चिकित्सा महाविद्यालयस्य स्नातकोत्तरपदवीं प्राप्तवन्तः। अतः एतासां महान्तः अनुभवः अस्मिन् क्षेत्रे विद्यते। एताः प्रति ग्रामं ग्रामं गत्वा तत्र सामुदायिकचिकित्सायाः प्रचारप्रसारः अपि च कार्यं तस्मिन् क्षेत्रे एताभिः क्रियते इति तासां कृतेपि हार्दं स्वागतं। पुष्पगुच्छैः अस्माकं NSS वालण्टियर्स् यच्छन्ति। मैडम अनन्तरं सन्ति रामानुजाचार्युलु महोदयाः। एते भवन्ति डेप्यूटी सिविल् सर्जन्। अस्माकं SV मेडिकल् कालेज् मध्ये एतेपि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तथैव अत्र विद्यमानाः सन्ति अस्माकं चिकित्साकेन्द्रस्य चिकित्सकाः बालदत्तात्रेय महोदयाः। तेभ्यः अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अपि च अत्र उपस्थिताः सन्ति अस्माकं सर्वेपि छात्राः NSS वालण्टियर्स् ये आगताः तेषां सर्वेषां कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तथैव शिक्षाविभागस्य सङ्घाय अध्यक्षाः च आगताः अस्माकम् आचार्याः N लता महोदयाः। तासां कृतेपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तथैव सङ्गणकविभागस्य सहायिका अध्यापिका अस्ति अस्माकं मेरी सुजाता महोदया। तासां कृतेपि हार्दं स्वागतं। तथैव साहित्यविभागस्य सहायकाध्यापिका अस्ति डॉक्टर बुल्टीदास महोदया। तासां कृतेपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अपि च ये अत्र समुपस्थिताः सन्ति तासां सर्वेषां कृते स्वागतम्। अस्माकं चिकित्साकेन्द्रस्य चिकित्सिका अस्ति अस्माकं श्वेता महोदया। तासां कृतेपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः। सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहृतवती डॉक्टर एस वैष्णवी महोदय। तस्याः कृते अपि सर्वेषां पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव एड्स् रोगस्य प्रभावः कीदृशः आसीत् इति। नाम पूर्णतया स च रोगः न गतः। अद्यतनकाले अपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, किन्तु पूर्वं यथा आसीत् तद्वत् नास्ति। तथापि पूर्णतया समाजः यः वर्तते ततः अयं रोगः गच्छेत् इति मत्वा प्रतिवर्षं नाम डिसेम्बर् 1 यद् दिनमस्ति तद्दिने वर्ल्ड एड्स डे इत्यस्य कार्यक्रमस्य अस्माभिः पाल्यते। अस्मिन् सन्दर्भे वर्ल्ड एड्स डे इत्यस्य सामान्य परिचयं दातुम् अत्र आगच्छति विश्वविद्यालयस्य अस्य NSS सेल् इत्यस्य कोऑर्डिनेटर संयोजकाः वर्तन्ते डॉक्टर A चंदुलाल महोदयाः। तान् अहं सविनयं सम्प्रार्थये कृपया स्वकीय परिचयं यच्छन्तु एड्स दिनम् उपलक्ष्य इति। Good morning, on the dash, off the dash, everybody. Today, AIDS Day, World AIDS Day. ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినం ఈరోజు. దాన్ని పురస్కరించుకొని మనందరం ఇక్కడ సమావేశం. ముందుగా మా నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ మా వీసీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని మాకు వెన్నుండి ఉండి NSSలో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా మాకు వెన్నుండి ఉండి ముందు నడుపుతున్నారు. ఆర్థికంగాను మానసిక శక్తిగాను అందరికీ మాకు ప్రోత్సహించి సారు వీసీ గారు మాకు ముందుకి నడుపుతున్నారు. వీసీ గారి ప్రోత్సాహంతోనే మేము అనేక కార్యక్రమాలు NSS తరఫున చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఇంకా బయట విలేజెస్కి వెళ్ళి కూడా మేము కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాల్సి ఉంది. సో ఈరోజు ముఖ్యంగా ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినం కాబట్టి దీనిపై అవగాహన కల్పించడం కోసం NSS క్యాలెండర్లో మాకు ఇది డిసెంబర్ 1 ఉంది కాబట్టి మేము సార్ని కలవడం జరిగింది. సారు దానికి అంగీకరించి మాకు ఈ కార్యక్రమం చేయమని ఆదేశించడం జరిగింది. సార్కి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అలాగే సమాజంలో ఎయిడ్స్ పట్ల అవగాహన ఉన్నా కూడా ఇంకా అవగాహన పరచవలసిన బాధ్యత ప్రతి చదువుకున్న పౌరుడిపై యువకులపై ఉన్నదని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఇది ఒక రోగం అన్నమాట. ఇది అంటే ఈ రోగం వచ్చిన తర్వాత ఈ డిసిషన్ దానికి చాలా మందులు లేవు. డాక్టర్ గారు దానిపైన మనకు సరైన అవగాహన ఇస్తారు. కాబట్టి
మిత్రులారా, ఈ ఎయిడ్స్పై ప్రతి మీ ఊళ్ళలో సమాజంలో మీ పట్ల ఉన్న అందరికీ దగ్గరున్న వాళ్ళందరికీ ఎయిడ్స్ మీద ఎట్లాంటి వ్యాధి, ఎయిడ్స్ వస్తే ఏం చేయాలి, ఎలాంటి మందులు వాడాలి, ఎవరిని సలహా సంప్రదించాలని వారికి అవగాహన కల్పిస్తే చాలా మంచిది. దాదాపు మేబీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 60% ఇది తగ్గింది, ఇంకా 40-50% ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో దీనిపై మన ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన అవసరం. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. धन्यवादाः. अधुना एड्स् विषये तत्र वक्तुम् आगच्छति. डिपार्ट्मेण्ट् आफ् कम्युनिटी मेडिसिन् इत्यस्य महोदयाः वर्तन्ते. डॉक्टर रामाञ्जनेयल् महोदयाः सिविल् सर्जन् श्री वेङ्कटेश्वर मेडिकल् कालेज् तः आगताः वर्तन्ते. एते एड्स् इति रोगः यः वर्तते तस्मिन् विषये उद्बोधनं करिष्यन्ति. అందరికీ నమస్కారం. So you are the people from various areas of this country and also some of the other countries also, like Bhutan, Nepal. I came to know when I entered this college, which is the ambience itself is so cool, greenery and purity. I was really impressed with the way you received. So on behalf of our department, we are extending our warm wishes on this important world global health awareness campaign. It is, in fact, it is one of the 11 global awareness campaigns. So World AIDS Day is one of them. So I try to convey, because I think the English medium is the one medium by which majority of people you can understand. So that's why I try to communicate you the latest developments, latest trends in the world and in our country, rather than the routine things. If you want to get any additional information, that you can ask during the interactive session. So meanwhile, I would like to give the latest position, how it is there across the world, right? If you see this World AIDS Day, why it is being observed? It has two objectives. One is to bring the awareness to the people, public. And second thing is to extend our solidarity, our mourning towards those people who died of this menace, AIDS menace. These are the two objectives why we are celebrating on the December 1st. So this day has been observed since 1988. Since when we are observing every year on December 1st. This is the how this World AIDS Day being observed. So if you look at the global scenario, so nearly 37.7 millions, if you convert into the crores, it is somewhere 3.7 crore people are living with HIV/AIDS across the globe. Many countries, particularly the African countries, South African countries and East African countries, they have the majority, 75% of the global cases are in the African countries. So previously, we also used to be one of the top countries with respect to the number of HIV/AIDS cases. But with the drastic steps we have taken up by the government, now the number has declined. Now present level is very, very less. So once again, out of these 37.7 cases across the globe, the India is harboring nearly 0.2%. 0.2% only we have. 0.2%. So this is that means that nearly 2,80,000 cases only are there in the India. So you know our India is having nearly 140 crore population. So in that condition, the 2,80,000 which amounts to just 0.2% prevalence is very, very bigger, right? So that's the thing. If you come to the incidence in the sense 0.05.
It means 1,80,000 cases every year being added in India. If you look at the global scenario, it is 1.5 million cases every year, new cases being reported. So this is the stage where we are now prevailing. So you know the India is called young nation, young India, because demographically the age group between 15 to 35 years, those who are called young people, if you look at the demography, 65% of our Indian population is youth. That's why India is being called young India. There is no other country in the world which has this sort of demography. This is unique for India. That's why we are sustainable development. We are heading towards sustainable development, and growth rate is on an average 7%. No country, including USA also. So we are the almost fifth largest economy in the world. So you are the people, you are the future India, because this is the right forum, right dictum where we can educate you, because yours is the future India. You youngsters are the future of India. That's why protecting yours is our job. That's why we came here, we are educating you. One of the menace to the mankind is the HIV/AIDS, which has no specific treatment. Only supportive treatment is there. So prevention is very, very essential. Once it is getting infected, no money, nothing going to help you. So this is about the world and Indian scenario. Then coming to the, who are the people who likely to get this HIV/AIDS? This is a big question many people will have. Still stigma is there. Nobody is bold enough to interact or ask about these issues. So this is the time to interact. It is time to make awareness. So who are these people, risk people? Particularly, these groups are very risk groups. One thing is injectable drug users. So nowadays, drugs is flowing like anything. Particularly, their target is the colleges and the students. So those who are addicted with these drugs, who are taking this injectable drug users, because of this infected needle, spreads the infection from one person to the other person. So main prevalence is among these risk group, injectable drug users. Then comes with the perverted sexual behavior, particularly male sex with male, gay males, and the sex workers, transgenders, sex workers, and their immediate family relatives. So this is the risk group. We are harboring this HIV infection more than the other sections of the society. So these are the areas one has to focus on. And if you look at some of the figures, how it is prevailing in these risk groups, if you look at the injectable drug users, it is 9% prevalent, 9%. If you take 100 drug users, 9 of them are found to be HIV positive. This is the scenario, situation. If you look at the this male sex with male, MSM briefly called, it is 3% prevalent among them. And the sex workers, it is 1.9%, around 2%, you can make it as round figure as 2%. This is how these risk groups are having this HIV prevalence. So there are a lot of measures has been taken by the government. Number of new developments, new initiatives, new planning, new programs have been launched by the national level programs. Like NACO is there, a state level APSACS is there, a district level district AIDS and prevention and control program is there. There are a lot of vertical programs who are, even with the help of NGOs, like even NSS people, all the NGOs, non-governmental organizations, every help is being taken towards achieving our goal. Our goal is to see the future where HIV is no longer a barrier to the health and equality. There should not be any discrimination between HIV patient.
he can sit along with us. The now need is to empower the society with the knowledge so that they equally see the HIV positive patients also equally. They have to be included. There should not be any discrimination, either in education, either in the treatment, or either in any civil activities. So this is how lot of programs coming up. So what are these national programs? Lot of new things. The first and foremost is the now the people are allowed to make their self-testing. Previously it was not there. They can purchase the kits in the medical store. They can examine themselves. Within 20 minutes the result will come. So it is very confidential. It cannot be shared to anybody else. So this is how the new developments are coming up. One is the self-testing kits came. And the ART treatment. Previously, the patient has to come to the hospital and get these ART tablets. Now, community delivery of the ART tablets. The people are coming to the doorstep. They are giving this ART drugs. And ART treatment for all, treat all is the strategy nowadays. Treat all. Whoever found to be HIV positive, they needs to be given ART treatment immediately, without any delay. At the most, 1 week is the time. After the time of the diagnosis, they should be put on ART treatment within 1 week, immediately. This is the another new trend developed. So treat all in the sense, whoever HIV positive, give them, irrespective of the age, irrespective of the gender, give them ART treatment. This is the new development. And also the treat lifelong the pregnant woman. Pregnant women who are found to be HIV positive, they needs ART treatment lifelong. This also been implemented, and testing will be there. So like this, lot of programs and inclusion of new drug. Dolutegravir is the new antiretroviral drug which comes under first line of antiretroviral ART treatment. That new drug has been added, so which is very effective. So these are some of the very new developments, new policies taken up by the national HIV policies, right? So this is how the program is being taken up and working on the see that this HIV AIDS will come down, and this World Health Organization and the Global Health Sector Strategy, these two organizations have given a target for the nations. For our country, so India is supposed to achieve these goals by 2030, right? What is these goals? So from the present level of HIV cases globally, it is nearly the present level of 6,80,000 to bring down to 1/3 by 2030. This is one of the goal. And even deaths also has to be present level down to the 1/3. So this is how the targets have been fixed, and we are working towards that direction. So this is how the government, with the help of a lot of NGO organizations, a lot of philanthropists and responsible persons, and you see the GDP, how much it is being spent on the health? It's only 3%, according to the WHO figures. These figures has to be brought up. If you look at the USA, where in their GDP, it is nearly 11 to 12% they are making expenditure on the health. But whereas in India, our GDP itself is low. In that, our allocation is very much low, 3%. Because recently, COVID pandemic made a big lesson for us. Because money not going to save any lives. So before the COVID, all are equal, right? No millionaire, no beggar, nothing. No women or no men, no old man, no younger man. So everybody looked like anything, because the virus such that, right? Pardon? Yeah, because yes, because the expenditure, if you look at the figures, our expenditure out of pocket on health, nearly 60% of the people, they are prone into the poverty.
So of their income, 60% they are expenditure on the health. This is the how it is going on. So that is the reason. So the solution is that the society, the public has to be empowered with the knowledge. There should be dissemination of the HIV science as such. Still there is a discrimination between the northern hemisphere and southern hemisphere of the globe. Lot of countries, even Africa, why so much cases in 75% of the cases are in Africa. So if you look at the some other figures with regards to the ART treatment, only 75% of the HIV cases are receiving ART treatment. What about the others? It's not accessible. That's why a strategy is saying that let us improve the services so that everybody equally access. That's why equalize. The theme for this is the equalize. Equalize in the sense there are inequalities. One has to accept it. Inequalities in regions, inequalities in the gender, inequalities in the age. So all these should be addressed. Unless otherwise you address the inequality, you are not going to end this AIDS pandemic. So that's why equalize. The first thing you equalize. Then only we can move towards the ending this AIDS pandemic. That's the main idea of that. So for that, improve the services. That's one thing. And empower the societies. This is another thing. So like that, several strategies has been developed, and also these WHO making several efforts with the concerned governments also regarding this one. So this how we can combat it is the responsibility of each and everyone, not the government, not the organizations. It is community responsibilities, lot more is there. Unless otherwise community participation, no program going to be successful. This one has to keep in mind. Particularly, I request the youth, please be, because you are studying for many years away from your home, away from your parents. So your sole guardian, your sole responsibility lies on the institution heads. So it is not possible for them to look into your behavior each and every, they can't focus on each and every. It is self-discipline is much more needed. Okay, so a lot of expectations are there on you. So let you be very sincere in your academics, in your behavior. Let bring the respect to the institution and to your parents, and bring your future a bright one. Thank you. Thank you so much, sir. Your valuable speech regarding to AIDS. One more I already told. So at the end of session, there will be interaction will be there. Whatever doubt you have, you can get clarified from us. Okay? धन्यवादः सर्, थैंक यू सो मच. अधुना कार्यक्रमस्य अस्य मुख्यवक्ता वर्तते डॉक्टर के सौम्यसुधा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस स्विम्स. ततः पूर्वं अत्र पवर् पायिण्ट् प्रेजेण्टेशन् अपि भवति, तदर्थम् एकस्मिन्नेव निमेषे तत्र सज्जा क्रियते. Good morning, everyone. So good morning, everyone, and on behalf of our department and our institute of Sri Venkateswara Medical College, I would like to express my gratitude and thanks to the National Sanskrit University, Tirupati, Vice Chancellor Sir, and NSS team members, and for giving us this opportunity to interact with you. And so really, if we would not be here today, we do not know what is this National Sanskrit University, what work and what language. I really do not know. By some words I can understand, I cannot understand all other words, and it is a great experience for us to interact with you today.
And coming to the day importance, as Sir said, and today is the World AIDS Day, not of national, it is a World AIDS Day. So everyone in the world they are celebrating this day. So this day is to recognize and to rise, to give care and affection, love, and to give the importance towards the AIDS patients. Can I know the difference between HIV and AIDS? Any one of the students can tell the difference between what is HIV and what is AIDS? Yes, what is HIV and what is S? Take this mic. Yes, good, very good. Very nice to hear the response from you. It's a virus that causes AIDS. Yes, how it started? So that is also mutations first in during 1900. So it started from chimpanzees, like our coronavirus, where it is a mutation of the bats. The gene started from the bats and snakes, the coronavirus. Like that only it is mutated from chimpanzees. And it started after mutations from the genes of the chimpanzees, it is transmitted to the human being. So there is no proper cure for this. There is no proper, so the treatment is there that we can reduce the viral load, but it will not give a complete cure treatment. So we can suppress the viral load. Wherever the viral load is suppressed, then the human being or the patient can be restore his health to a normal level. So our community medicine department main goal and aim is to give a positive health to everyone. That is the WHO statement of health for all. That is, health is a state of complete physical, mental, social well-being, not merely an absence of disease or infirmity. Whomever they have got HIV also, we are restoring there to attain a normal level by applying the viral reduction and supportive care, that is the rehabilitation services. And the red ribbon, so sir told that already. So this red ribbon, this is a symbol for decade. So people who are searching and gathering information, and this red color is the boldness and love, affection, care, warmth, and solidarity which we are showing towards the AIDS patients or HIV patients. HIV is the infection, as you said, and AIDS is the manifestation of the disease. So whomever will get the infection, so it will take some period to manifest the disease, that is reduction of CD4 cell count. So the normal CD4 cell count ranges from 1000 to 1500. So this manifestation of the AIDS will starts with whenever the CD4 cell counts decreases from 500, less than 500. Then different types of the manifestations you will get, depends upon the body response of the human being. And this soon immediately, the transmission modes you know, so blood transfusion is the main, and seminal or intercourse. So sir told the risk groups, that is male sex with women, hijras, transgenders, IUD drug users. Blood transfusion is the main, and mother to fetus transmission is little less, but it can transmit during the feeding of the babies. And other routes also there. So this, where I am, I forget. So this transmission, because of the major blood transmission, and is the route of the transmission is the major one. So the prevention will also applies the abstinence of the sex, that is ABC method, abstinence of the sex before marriage, and be faithful to the partner, and promotion of the condoms. So that is our other protective measures. So because of that only, so we are having blood screening program, and this school educational program, universities talk program. In that we are going to create awareness towards about the disease modes of the transmission, preventive and treatment aspect to all the students. So here your role, main role, why we are telling here is that you supposed to know this is the information is there. So about the disease and the transmission and the prevention. So prevention to reduce the virus load, we are giving treatment. So 3 types of combination of the drugs are available: nucleoside transcript, reverse transcript, and NI. 3 types of drugs are there. So we are giving dependence upon the body dose of the patients and response of the patients. So this is the blood screening programs also is there to avoid mismatched or infected to syringes or needles. And one red ribbon express also is initiated by Government of India. It
traveled all the stations and it returned also in that Red Ribbon Express. So all the information regarding the HIV AIDS and the people, everything it is given. So I think Tirupati also got this Red Ribbon Express, so it will travel all over the India. Whenever you will get your chance, you just go and visit this Red Ribbon Express. And rest are told. And now anyone of you will. So this is all. Thank you. विशिष्य एड्स् रोगः यः वर्तते तस्य After diagnosis, so we are counseling. So patient will be very much apprehended. So patient will be very much fear. So sir told that there is self-diagnostic kits and are available at all medical shops and centers. The patient will become very much feared and apprehension towards the treatment and their family members. So for that, to relieve that apprehension and fear, so we are going to give counseling also. So our counselor is here and she will tell you how she will counsel. So after test and before test, before treatment and after treatment. I request Ahalya madam, our MSW counselor, to tell about the counseling process. జబ్బు వచ్చిందని భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. జబ్బు రాకుండా చూసుకోవడమే బెటర్ కదా. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ ఫాలో దట్ థింగ్ ఓన్లీ. మనం ఫస్ట్ అది జబ్బు గురించి తెలుసుకుంటే కదా ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయి ఏమున్నాయి దానికి రాకుండా చూసుకోవడానికి మనం ట్రై చేస్తాం. సో జబ్బు లక్షణాలు ఎవరికైనా తెలుసా అండి? ఎయిడ్స్ కానీ హెచ్ఐవి డిసీజ్ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎనీబడీ కెన్ టెల్ ప్లీజ్, ఎనీవన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైరల్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి హెచ్ఐవి మనకు వచ్చింది అనుకోండి, ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఫీవర్ ఉంటుంది. 3 weeks నుంచి కంటిన్యూస్గా ఫీవర్ ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చి డయేరియా ఉంటుంది, లాస్ ఆఫ్ అపటైట్, లాస్ ఆఫ్ వెయిట్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంటే 4 symptoms ఉంటాయి. 4 symptoms మనకి ఎప్పుడైనా ఉన్నాయని అనుకుంటే, లేదా మీరు ఎవరికైనా డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ టెస్ట్లో పాజిటివ్ వచ్చేదానికి వెంటనే మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, భయపెట్టాల్సిన అవసరము లేదు. వాడికి వచ్చిందని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. పిలిచి వాని ముందరే ఇంకోసారి మనం టెస్ట్ చేసి, నాన్న నీకు ఏంటి, ఎలా వచ్చింది, ఏమొచ్చిందో మన ఫాస్ట్ సిస్టమ్ మనం కనుక్కోవాలి. నిదానంగా అబ్బాయిని భయపెట్టకుండా మనం కనుక్కోవాలి. కనుక్కొని వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని పిలిచి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ట్రీట్మెంట్ని బ్రేక్ డౌన్ కాకుండా చూసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా నాన్న? ఎవరికైనా అర్థం అవ్వట్లేదా? తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఓ నో ప్రాబ్లం. ఓకే 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 సార్. అలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ డ్రగ్స్ ఇవి చూసుకున్న తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ ఎవరికైనా ఉన్నా వచ్చినా, యూత్ ఎక్కువ కాబట్టి మీకే ఎక్కువగా మేము ఎందుకు చెప్తున్నామంటే యూత్లో ఎక్కువ మిస్టేక్స్ జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీకే మేము ఎక్కువగా ఈ పాయింట్స్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళని మనం చిన్న చూపుగా చూడడం అవంతా అవసరం లేదు. వాళ్ళతో కలిసి తిరిగినా, కలిసి తిన్నా, కలిసి పడుకున్నా మనకేం అలాంటి జబ్బు అంతా మనకి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఫర్ సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిషన్స్, బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ మన వాళ్ళ నుంచి తీసుకున్న వాళ్ళ నుంచి వచ్చినా కూడా ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్లో ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అవి అవాయిడ్ చేయగలిగితే చాలు. మేజర్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ అవాయిడ్ చేసుకోండి. బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలంటే మనం అంతవరకు అనీమిక్గా పోకుండా చూసుకుంటే చాలు. ఇన్ ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ ఆల్సో అనీమిక్గా లేకుండా చూసుకుంటే చాలు. ఓకే, ఒక్కసారి హెచ్ఐవి వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళకి, అంటే అసలు ఏంటి, మన ఒక ఇల్లు ఉందనుకోండి, వాళ్ళు మన పెద్ద ఇల్లు ఉంటే ఇంట్లో ధనము బంగారం అవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, మనం బయట పక్కన ఎవరినైనా పెట్టుకుంటాం, సెక్యూరిటీస్ని ఎక్కువ పెట్టుకుంటాం. ఆ సెక్యూరిటీ చనిపోయారనుకోండి, దొంగలు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చి మన బంగారాన్ని అంతా ఎత్తుకుపోతారు. ఇట్ మీన్స్ మన బాడీలో ఎప్పుడైతే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ పడిపోతుందో, తక్కువైపోతుందో, అప్పుడు వేరే వేరే జబ్బులన్నీ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే చనిపోతుందో అప్పుడు వేరే జబ్బులు, టీబీ, హెచ్ఐవి, ఇవన్నీ కూడా ఎన్ని రకాల జబ్బులు ఉంటాయి, పశువులకు వచ్చే జబ్బు కూడా, మిగతా జబ్బులు కూడా మనకు వస్తాయి. అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్లీజ్.
not show any social stigma towards the HIV patients. So once after initiation of the treatment, the person will become sterile. So no longer they can transmit the infection from one to another. That is what I want to add. So soon after, previous గా ఏంటంటే ఇంతకు ముందు whenever the viral load, CD4 cell count decreases below 500, then only we are going to start the treatment ART. So ఇప్పుడు current treatment ఏంటంటే if you are positive, start immediately. Start immediately the treatment. Immediately you start, so that you will become sterile, so that you will no longer you will transmit the disease from one person to another person. So the transmission will become zero. So our recent goal, what SAR told to 2030 is to achieve 95% of the case detection. 95% of the people should initiate the ART soon immediately after diagnosis, and 95% of the patient people should have decreased viral load. So this is the strategy we are following. ఎంత త్వరగా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఎంత త్వరగా మనం ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తే అంత త్వరగా మనము జబ్బును తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. So after 2030, our goal is to attain zero new case detection, zero transmission, and zero deaths also after 2030. So 2030 we are setting a goal of 95% of the new case detection. 95% of the people who are diseased should start the treatment within 74 hours, and 95% should decrease the viral load in their body. And so if as early as possible, if you initiated the treatment, so the person will become sterile, and no longer the person can transmit the infection from one to one. So this is what I want to add. And this treatment is available at all the levels, all the district levels, and PHCs lo kuda undi ka sir, PHCs also. So it is available. So you share this information whomever it is needed and necessary. Thank you. Thank you so much. Especially about AIDS, they are having four elements when we are means especially for AIDS. One is sexual, second is blood transformation, third one is injections, syringes, etc. अतः एतेषां विषये यदि अस्माकं जागरूकता भवति चेत् फोर्थ यस् ओके अधुना वदन्ति यदि भवतां पक्षतः यदि ये केऽपि प्रश्नाः यदि यान् कानपि प्रश्नान् प्रष्टुमर्हन्ति तर्हि प्रष्टुमर्हन्ति. इफ् यू वाण्ट् टु आस्क् एनी डौट्स् सो प्लीज़ डॉक्टर्स विल बी क्लारिफाई एनीबडी. अत्र अत्र लज्जायाः विषयः नास्ति, यतोहि अस्माकं जीवनं यदस्ति तत् जीवनं संरक्षणीयं वर्तते. अतः विशिष्य युवकाः ये वर्तन्ते तेषां कृते एव अत्र विशिष्य अवधानं भवेत्, ज्ञानं च भवेत्. अतः यदि प्रश्नान् प्रष्टुमिच्छन्ति तर्हि प्रष्टुमर्हन्ति. If you want to ask anyone, yes, sir. Mike. Because this is the question many of the people will have. Because lot of the people who are known their status that HIV, lot of people will go into depression. Some of them will even hang themselves. Lot of marriages will be broken, that's good. But hanging themselves is not the solution. Because nowadays lot of new drugs have been evolved, and we are keeping with this ART drugs the viral load very well under control. So as long as the viral load is under control, they can live life as normal as other person also. That's why in future lot of changes may come, hopefully, in the management. That's why no one should lose their hope. They can live life as long as the God has given, provided if you take all these measures. One is ART treatment, number 2 is good nutrition, number 3 is the meditation. You keep yourself stressless and keep busy yourself in doing the services to the others. Do before you leave this globe good thing for the society.
That's the message I would like to. ధన్యవాదాः ఇది సంశయ నివృత్తిర్భవతి ప్రష్టుమిచ్చంతే ప్రష్టుమర్హంతి ఛాత్రాः. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆస్క్ ఎనీవన్ ప్లీజ్. यः कोऽपि छात्रः या कापि you can ask in Hindi also, no problem. Yes sir, sure. Okay, Hindi, Telugu, English and Sanskrit, whatever it may be. प्रश्नमिच्छन्ति. हरि ओम्. ఎయిడ్స్ ఇచ్చేసి ఎయిడ్స్ యొక్క లక్షణములు అడుగుతున్నారు సార్. No question left without answering. What even it is repetition, I am going to give it. Right? There are 4 stages in AIDS. AIDS is not the starting point. In the spectrum of the disease, AIDS is the end stage. So when you call AIDS, to start with, it is HIV infection, asymptomatic phase. It looks everything normal. No one can identify you that person is having HIV virus. It looks everything normal, no symptoms, nothing. That is asymptomatic phase. After that, symptoms slowly develop. That is the second stage. Okay, those symptoms are like any flu, any fever, anything like even malaria type. We can't differentiate. It is something like usual disease. It comes. When the third condition will come, where the CD4 count very much compromised, in the sense immune system is compromised. Now started. Their AIDS related complex will come into the picture, where he will get frequently diseases, frequently. So then we can suspect and we can do the test, definitely we, find out. Even in the first stage itself also we can find out, provided if you get the tested after the window period, that is 6 to 12 weeks, you will be found those people who are harboring this HIV virus, they will be tested positive. After that also it is not confirmative, that is just only screening test. Then there are lot of tests are there which can confirm. Western blot test is there, like that. So we can't, even the test is positive, we can't label him or her as positive. There are a lot of tests are there, phases are there. Unless otherwise all these tests comes to be the positive, then only we can confirm the case. So in third case, AIDS related complexes like even tuberculosis, some other diseases all appears. Okay, then the final stage is the AIDS stage, which is otherwise called as Slim's disease, because slim in the sense only skin and bones will be remain, all muscles get melted. So this is how the disease will progress. This is the 4th stage, which is called as Slim's disease or AIDS stage, where the CD4 count falls less than 200 per cubic millimeter. This is the clinical indication test. If the CD4 count is very much less, then it is every chance to get all the opportunistic infection, whatever it may be, which disease will not normally, usually harm, will harm, because the immune system already get compromised. These are the how the disease. So in the Slim disease, the 3 cardinal features are fever more than 3 weeks. Whatever antibiotics, whatever costly medicines you take, the fever will not come down. That's one indication. And diarrhea more than 3 weeks. Whatever medicine you take, the diarrhea will not get controlled. Then we have to get suspicion. Okay, weight loss without any reason. Any reason, he is losing weight loss more than 10%. Say some 60 kgs patient is there. Within 1 month time, he loses 6 kgs. He comes to 54 kgs. Then we have to think over what is happening in our body. Then it is time to get the tested. So these are the how the disease clinically evolves. This is about okay. Right. Any more questions? Yes.
severity levels depends on whether the person after HIV will get, it is previously the time interval from the time of HIV virus entering into the body, the time of developing AIDS. How it is determined? There are several factors are there which determines the time taken for this phase. So it is not equal for all. So it is different based on their immune level. So the severity, as you asking, this severity depends on the immunity, not even age also. Some people at the age of 40, they are leading life like anything. After 20, 30 years of having HIV positive, they are leading normally. They are not entered even in AIDS phase even after 30 years, provided they are taking scrupulously the ART treatment regularly. They are taking good diet, good meditation, keeping all other activities. So making themselves very congenial for good health, they can maintain. For how long, we can't say, even doctors can't say how long this person is going to. So it all depends on the individual body nature, individual immune system levels. So that's how they can lead even 20, 30. But one thing I say you openly, once the person reaches AIDS phase, that is CD4 count less than 200, maximum 2 or 3 years, not more than that. Once AIDS phase is reached, at any time it can happen, maximum 2 to 3 years. That's all. Right. Any more question? See, drugs, నేను చెప్తాను మీ క్వశ్చన్కి తెలుగు యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఓకే వాట్ అబౌట్ అదర్స్ కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ది తెలుగు ఆల్సో బికాస్ ఫర్ హిమ్ సో దట్స్ వై యా see the question is you told that sir drugs will cause the HIV, there is possibility of HIV getting infection through drugs. Now I am giving clarity. See, drugs, the route of administration of drugs are various sources are there. Some drugs will be taken by nose like snuffles, some drugs will be taken orally, some drugs will be taken intravenously. So those drugs which are taken intravenously are at the risk of getting this HIV infection, not others. Right? Anything, any more question? Yes? From this side, because a lot of questions are coming from this side. If a pregnant woman gives a birth to a baby, then as the baby is connected to the mother body that, with umbilical cord, then after the birth, the baby will be HIV positive or not? See, HIV positivity for a baby comes while the baby in the womb itself. It is not at the time of delivery, or even at the time of delivery, a risk is there. So, if the ANC antenatal case, a pregnant lady is found to be HIV positive, several steps are there by which the vertical transmission of the virus through the placenta, through the umbilical cord to the baby, this chain can be break by reducing the viral load in the pregnant woman by giving retroviral drugs, antiretroviral drugs. So there is provision is there. Nevirapine tablets are there. Nevirapine, even for after delivery, the syrup drops will also be given to the baby also. Whatever the viral load entered through this umbilical cord, placenta to the baby during the process of birth. So to reduce that viral load also, soon after delivery, the baby also covered with antiretroviral therapy, and also test also be done. What is the status of this baby? Because pregnant lady already found to be HIV positive. What is the status of this baby? So he provided, that is called PMCTC, prevention of mother to child transmission. So if you take these measures, we can break the chance. The baby can be born with good health, without HIV virus, even though mother is HIV positive. So that's the. Any more questions? Okay. You want to talk? Yeah.
और व्हाट इज योर नेम भी पूछी, मगर एक एक को हम नहीं पूछ सकते ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, उसको भी कुछ नहीं बोले। नमस्ते। ओके, तो सब लोग हिंदी जानते हैं। भवत्या नाम की, मई नाम मेरा, मम नाम डॉक्टर शेख यास्मीन, माय फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, एसवी मेडिकल कॉलेज। तो जैसे आप लोग अब आपका पीजी रहता, आपका यूजी भी रहता ना, बीएड पूरा, तो ऐसा मेरा यूजी कड़पा से करी थी और अब पीजी यहाँ तिरुपति से कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ लड़कियों ने पूछा कि सर लोग पूरा तेलुगु हिंदी में इंग्लिश में बोल रहे थे, तो थोड़ा हिंदी में बताइए बल्कि। तो आप क्या इतना जब सर ना बोले आप क्या जानते हो एचआईवी और एड्स के बारे में, आपको क्या पता चला कि आप जो सर मैम जो लोग बोले, तो कैसे आता है एचआईवी और एड्स? और अभी सर बोले ना कैसे आता है एचआईवी? हाँ, सेक्स ड्रग से आता और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आता। तो पूछे कि कैसा आता है, ड्रग से कैसा आता, तो सर उसको समझाए। सपोज आप समझो अगर आईवी ड्रग अब्यूजर्स है, कौन रहते आईवी ड्रग अब्यूजर्स? जो लोग बहुत खुश है मेरे वैसा, वैसे लोग आईवी ड्रग अब्यूजर्स रहते ना, जो लोग लव करके बहुत ये होके डिप्रेशन में चले गए और सैड हुए, वो लोग आईवी ड्रग अब्यूजर्स रहते। कौन रहते? जो लोग सैड है, जो लोग डिप्रेशन है, वो लोग आईवी ड्रग्स लेते रहते। क्यों लेते रहते? अल्कोहल क्यों पीते लोग? स्ट्रेस रिलीव करने के लिए थोड़े लोग पीते रहते। तो सिमिलरली अगर आपका एग्जाम है तो आप लोग क्या करते हैं, चलो बहुत एग्जाम स्ट्रेस है, चलो चाय पी के आएंगे, बल्कि जाके चाय पीते रहते। हाँ, ऐसे ही लोग जो लोग स्ट्रेस में रहते, वो इंजेक्शन जो रहते, वो ड्रग्स जो रहते, ऐसे 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 गुजर लेते, ऐसे लेके लेके लेके। तो जब क्या होता, उनका जो ब्लड रहता एक से और एक दूसरों को जाता या नहीं? हाँ, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो लड़का है जो पहले सेक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया करके होगा ना, तो वो लड़के को एचआईवी होके रहेगा। तो जब वो एचआईवी अगर वो लड़की को है, तो वही सुई बार बार अगर दूसरे लोग भी जा रहे हैं, तो उससे ऐसे ट्रांसमिशन है। और एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑब्वियसली जो भी रहता ब्लड में ही रहता, आप सबको जानते हो ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी रहते। हाँ, व्हाट आर डब्ल्यूबीसी? हाँ, तो ल्यूकोसाइट्स न्यूट्रोफिल से पूरे रहते। इसमें जो कम हो जाते हैं पूरा, क्यों कम होते हैं, मतलब उसका फीचर वो है जैसे फीवर, वेट लॉस होता है वो पूरा। तो सिमिलरली वो ब्लड जो है, जिसका ब्लड में वो एंटीजन जो है, वो एंटीजन सबको ऐसे जाता रहता। फिर मदर टू फीटस, मदर को फीटस को कौन सा कनेक्शन रहता, क्या बोलते हैं उस कनेक्शन को? अम्बिलिकल कॉर्ड रहता। तो उससे पूरा फूड या कुछ भी हो उसे ट्रांसफर होता रहता है ना। तो सिमिलरली मदर से भी चाइल्ड को आने के चांसेस रहते। और इस क्या है, इस 2022 का मेन थीम है इक्वलाइज, है ना। तो इक्वलाइज का मतलब क्या है? सपोज मैं पढ़ रही हूँ और मैं अच्छा टॉप रैंक में आई, और एक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो फेल हो गया, तो मैं छी तू फेल हो गया, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा बोलते हैं हम लोग। जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको नहीं बोलते ना, मतलब हम लोग इक्वल रहना। इसका मतलब नहीं कि वो मैं ग्रेट हूँ वो कम है, कुछ की टाइम खराब हो गया वो पास फेल हो गया शायद, नहीं। तो ऐसे ही एचआईवी जो है, जो टाइम खराब होके हमारे पास आता, मतलब मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मैं जा रही हूँ, सपोज एक पर्सन जा रहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हॉस्पिटल के लिए, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो ऑलरेडी ब्लड स्टोर होके था, वो एचआईवी इंसान का था, क्या उसकी गलती होती कि अगर वो ब्लड लेता तो एचआईवी आया? उसकी गलती नहीं होती ना, वो ब्लड में एचआईवी था मगर इसको आया क्योंकि वही सुई से जो चढ़ा रहे इसको आया। तो हमारी गलती नहीं होती, वो हमारी गलती नहीं होती कि एचआईवी आया। इसलिए अगर आप जो भी नॉर्मल है, क्यों बोल रही हूँ, मतलब जो भी कॉमन पीपल है, एचआईवी मतलब सिर्फ सेक्स 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 से आता बल्कि सोचते रहते। तो अगर इफ ए पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव, तो हम लोग क्या सोचते हैं, वो लड़का गंदा है इसलिए उसको एचआईवी आया, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। वो इक्वलाइज का मीनिंग है वही, जो हम लोग जाने अनजाने में एचआईवी आ सकता, किसी को भी आ सकता। तो इसलिए जो उन लोगों का है स्टिग्मा, ऐसा करके ऐसा सेपरेट नहीं करना। एंड और एक एग्जांपल, गर्ल्स जो रहते प्रोस्टिट्यूशन में ये रहते, तो क्यों रहते प्रोस्टिट्यूशन? बहुत जनों को फाइनेंशियल स्टेटस कम रहता, कुछ की बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत गर्ल्स आज वो एक्टिविटीज करना पड़ रहा है या नहीं। तो वो एक्टिविटीज करने से गर्ल की गलती नहीं होती कि वो ये कर रही, मगर ऐसे ही वैसा एक लड़का उससे जाके बहुत जनों से ऐसा होने की वजह से वो ट्रांसमिट होता रहता, ठीक है। तो इक्वलाइज का मतलब वो है कि आप कभी भी छोटी नजर से नहीं देखना जो लोग एचआईवी पॉजिटिव है, आप कभी भी उनको ऐसा फील नहीं कराना कि वो लोग एचआईवी है और के बल्कि, ठीक है। तो आज आप लोग क्या सीखा, जो मैं बोली क्या सीखा आप लोग? आपके जो भी सोसाइटी में है आप लोग क्या बोलते हैं?
देना कि ऐसा एचआईवी लोगों के लिए छोटा नहीं देखना हो, तो वही मेन थीम है। और जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रग अब्यूजर्स की वजह से, ब्लड मदर टू फीटस की वजह से, ये सब भी आता। ठीक है, अभी थोड़ा समझ में आया? जो लोग मेरे को हिंदी में बोलने के लिए पूछा, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आया? ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड आपकी यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी है, बहुत हरियाली है, आने के बाद बहुत एम्बियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे सर। So teacher, thank you for giving me this opportunity. Yes, the last point what I want to add you, the government in also join this college to learn Sanskrit. So government initiated beneficiary programs also towards the AIDS patients. So different state government has different types of schemes. So in Andhra Pradesh, the AIDS patients, they will give one identity card. So if they show that card, they will get a subsidy of 50% of traveling from buses and railways transport. And they will get subsidy food grains also, rice, dal, everything in subsidy prices. And this project it is running in Andhra Pradesh and in state of Maharashtra. Sangam project name is Sangam. So they will the same thing, the food grains, clothes, and subsidy prices in the transport they will get. And the same scheme applies in Kolkata also, West Bengal. So this is the Satragachi. Some scheme name is Satragachi Sangam. So whatever it may be, the scheme name will be in the local language in different states. But the theme behind is they should get food, clothes, and transport concession. So and other free of cost of the drugs and everything, information, everything they will get in free of cost. And I would like to our MPHEO also is here. Field experience. So any other postgraduate want to interact? Okay, thank you. एड्स् इति विषयः महान् वर्तते, अतः तस्मिन् विषये यदि वयं चर्चां कुर्मः एवमेव समयः भवति। अतः यदि भवतां कृते इतोपि जिज्ञासा वर्तते तर्हि एते वैद्यविभागात् ये आगताः तेषां समीपे भवन्तः गत्वा प्रष्टुमर्हन्ति। धन्यवादाः एस्पेशलि फॉर योर ओरिएंटेशन रिगार्डिंग टू एड्स डिसीज। थैंक यू सो मच टू ऑल। अधुना समयः वर्तते अध्यक्ष भाषणाय। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव अस्माकं कुलपतयः आचार्याः JSR कृष्णमूर्ति महोदयाः यदा नाम एकस्मिन्नेव दिने 29th अस्माभिः मध्याह्ने गत्वा सर एवं रीत्या एड्स डे इति वर्तते, अयं कार्यक्रमः आयोजनीयः इति यदा अस्माभिः पृष्टं तदा झटिति वितिन् सेकेंड्स् मध्ये ते ओम् इत्युक्त्वा अङ्गीकारः दत्तः वर्तते। अनन्तरं न केवलं तस्मिन् विषये अपि च प्रातः राली विषये अपि ते प्रातः आगत्य राली मध्ये अपि तेषां योगदानम् आसीत्। अधुना च कार्यक्रमे अपि ते वर्तन्ते। अतः एवं रीत्या सुहृत् स्वभावशीलाः वर्तन्ते अस्माकं कुलपतयः। अतः तेषां कृते सर्वेषां पक्षतः एकवारं धन्यवादम् उक्त्वा स्वकीय अध्यक्ष वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति सम्प्रार्थये। धन्वन्तरिमुपास्महे। We are not for me, for you. It is the motto of NSS. हम बढ़ेंगे तो सभी बढ़ेंगे, यही उसका गीत में तो हमने सुना। ये बहुत ही सुंदर बात है। पुराने ज़माने में जो दो तरह के वैद्य रहते थे, उन्हीं का जो है एक वर्ग होता है, एक तो चरक वर्ग और सुश्रुत वर्ग। वही चरक और सुश्रुत। सुश्रुत माने वहाँ जा कर के वो सुन के उसका जो है इलाज करते थे, वो सुश्रुत वही है। और ये चरक जो है घर घर जा कर के जो इलाज करते थे, उसी के प्रतिनिधिभूत हैं ये दोनों। वो कम्युनिटी मेडिसिन तद् डिपार्ट्मेण्ट् तः एते आगताः।
मैंने इनकारनेशन ऑफ चरका डॉक्टर रामांजनेयुलु and also श्री संध्या सुधा, इन्हीं के नाम में ही है। सौम्य भी है, सुधा भी है। मैंने एक तो अमृत है, अमृत प्रवाह से जैसे हम ओतप्रोत रहते हैं, इनके भाषण से हम उपकृत रहे। सर वी एनरिच्ड with your speech and also messages। माने एड्स का मतलब चाहे हाल ही में आया होगा, हमारे बचपन का ये है। आज को HIV टीका भी लगाते रहते हैं कि बचपन से उसका प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर तत्कथ्यते ततः पूर्व प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम। तदेव यही विषय है। उसका कीचड़ लगाने से जो है उसके दूर रहना ही अच्छा रहेगा। यही विषय अपने रामांजनायुलु साहब ने भी कहा, आपने भी कहा। और हमारा जो ये एक यूनिक है, कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारा मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स आर हियर, इट इज़ मिनी इंडिया। मैंने आसमाना भी जो है अभी कह रही थी कि वो संस्कृत में बोलने लगी। मैंने यहाँ तक आने से जो है, मैंने आपका भी कुछ अब कह रहे हैं कि हम संस्कृत से परिचित हो गए। और इस तरह का जो है आपस में मिलना जुलना चाहिए। हमारा एक आइलैंड है, मणिद्वीप समझिए। यहाँ कभी भी हमारा बोर्ड बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर आएंगे तो जैसे स्वयं प्रभा गुहा है, वो वानर सारे उधर चले गए तो अंदर इतना जो हरियाली ये सब कुछ वहाँ रामायण में मिलता है। इसी तरह का हमारा ये जो है एक सीमित है। और ये 42 एकड़ में हमारा ये भवन वगैरह है, परिसर है। इसमें इतने लोग आते हैं कि हमारे जो 18 स्टेट से छात्र पढ़ रहे हैं। 18 स्टेट्स, दे आर केम फ्रॉम 17 स्टेट्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस। सारे भारतीय भाषाएं हैं और आपस में बात करते हैं। हमारा एक ही भाषा है, मातृभाषा समझिए, वो संस्कृत ही है। और तेलुगु समझते हैं। तेलुगु समझते हुए भी भाषण करेंगे तो हमारे संस्कृति माध्यम रहेगा। और यहाँ आगे आप विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो धन्वंतरी दूसरे हैं, इनकारनेशन ऑफ धन्वंतरी, हमारा जो है बाल दत्तात्रेय जी हैं। और उन्हीं का जो कि प्रतिनिधित्व करेंगे हमारा श्वेता जो है वो भी है। माने इन दोनों आने से हमारा जितने जो इस संदर्भ में कार्यक्रम रहते हैं, इनके बड़े उत्साह से सबको कुछ समझना चाहिए, समझाना चाहिए, इसी तमन्ना से ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और इसका पूरा श्रेय हमारे जो युवा तरुण है, हमारा चंदूलाल जी। मैंने सोचा कि ये जो एनएसएस का वो खाली हो गया तो किसको दें, तो सोचा कि ये तो खाली है इसलिए इनको देंगे तो कुछ तो ये हमेशा कुछ काम करना चाहते हैं, करते रहते हैं। और इनको वो भार सौंप दिया, तभी से हमारा एनएसएस इतना प्रगति पद पर जा रहा है। और मैं इनके आभारी हूँ। और इनके जितने जो हमारे बेटियां हैं, जो बुल्टी दास और वैष्णवी, ये सारे जो है इतना वो काम करते रहते हैं। और भी जितने जो ऑफिसर्स हैं और कुमार, ये तो हमारे सेनानी में कहता हूँ, क्योंकि वो स्कंद का राम ही कुमार है, ये तो कुमार है। इनका तो अभी बालकांड में है, बच्चे भी हैं, लेकिन वो उसको उन सबको छोड़ करके इसी काम में लगे रहते हैं। कोई भी हो तो पूरा ये होना चाहिए, वो चाहिए। इसी जो अवेयरनेस प्रोग्राम, माने इसमें कोई शोभा यात्रा नहीं, अवेयरनेस प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट एड्स, इसी के लिए हम एकत्रित हुए। हमारे जितने जो नागरिक हैं उनको भी समझाना चाहिए, अपने नारों से उनसे परिचय कराना चाहिए। और एड्स के बारे में आपने कहा कि केवल 0.2 एवं रूपेण वर्तते, ऐसा ही ये कह रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा जो परिवार
की व्यवस्था जो है पुराने ज़माने से आ रहा है। उसी परिवार से माने एका भार्या सुंदरी व दरीवा, एक ही पत्नी है, एक पत्नी व्रत है। राम ने ऐसा किया, इसलिए हमारे एड्स हमारे पास में नहीं आता। और बीच में नागरिकता और ये जो वैदेशिक परंपरा जब आई तो उसमें कुछ ड्रग्स भी आ गए। और यहाँ तक है कि जैसे एक सुई दूसरे का जो एड्स का है उसके रोगी से हम लेंगे तो उससे भी फैलता है। और एक हमारे मित्र हैं, वो तो एक मठ में गए, उनका कुछ मुड़वाना था, एक ब्लेड से उनका हो गया। मुझे आश्चर्य लगा कि ये भी है, अभी भी वो प्रिवेंशन चल रहा है, इस तरह का भी होता है। और ये सारे प्रिवेंशन जितने हम लेते हैं आप ही के वजह से लेते हैं, क्योंकि आप हमें समझाएंगे। और कोई भी जो है सुई लगाने से जो है वो पुराने ज़माने में उसको जो है क्या कहते हैं कि एक गर्म पानी में उबाल करके दूसरे को लगाते थे। आजकल वो नहीं, एक एक इंजेक्शन का एक एक सुई नया नया लगाते हैं। इसका कारण यही है कि ये न हो। और इसके बारे में हम सोचेंगे तो हमारे आयुर्वेद में शोष एक रोग है। शोष रोग का क्या मतलब है कि हमारे जितने सेल्स हैं वो सेल्स पूरा जो है एक ही से सीधा जो है वो डेड हो जाते, मृत हो जाते। उसी से आपने कहा कि एक बुखार होता है और उसका इलाज करने पर भी नहीं होता, ये सारे सिम्टम्स हैं। और दूसरी बात है कोई रोग माने उसी के लगातार कई रोग उसमें आ जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी पावर तो चला गया, चलाने से जो है उसका रोग निरोधक शक्ति नहीं है। उसी से धीरे 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 अपना वजन भी घटता जाता है। यही इस रोग का लक्षण है। ये सब कुछ हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में दिया है। और ये सब कुछ समझते हुए भी मैंने गीता में कहा, परसों गीता जयंती है, कहा कि धर्मावरुद्ध अवरुद्ध कामोस्मि, माने भगवान का स्वरूप क्या है? धर्म से अविरुद्ध काम ही मैं हूँ। काम माने इच्छा, वो भी मिलने की इच्छा जो कुछ है वही भगवान का स्वरूप है। माने धर्म क्या है उसी के बारे में कहा कि एक नातिचरामी, दोनों में प्रतिज्ञा होती है। उसी का एक अश्लील बात को एक संस्कृत करने के लिए ये वैवाहिक संस्कार आया। धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामी। उनको हम समझेंगे तो वो पूरी बात समझाते। कामे च नातिचरामी माने पूरा क्या होता है कि जैसे हमारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं और इनका जो है वहाँ कन्याकुमारी से आकर के वहाँ गौहती तक गए तो बीच में उनका भी अपना स्वाभाविक है, प्रवृत्ति रेशा भूतानां मध्यम इदम किम भवति मैथुनम, प्रवृत्ति ही भवति। उस प्रवृत्ति से वो नहीं रोक पाते, इसीलिए वो बढ़ जाता है। इसी के मेडिटेशन के बारे में इन्होंने कहा। हमारे सारे योगी हैं, हमारा योग विभाग ही समृद्ध है। जैसे एनएसएस समृद्ध है उसी तरह का योगा डिपार्टमेंट भी समर्थ है। यहाँ जो बैठे हैं जो हमारे बच्चे और ये दोनों जो है योग अभ्यास करते रहते हैं। कभी आप पधारिए, हमारे साथ काम कर लीजिए। जैसे अस्मला, जैसे आप भी संस्कृत सीखिए, आपसे जो है आपस में कुछ बातचीत हो, संस्कृत पढ़ें, और यही हमारा लक्ष्य है। और संस्कृत के साथ आप माने 9 महीने यहाँ रहेंगे तो आपका कई भाषाएं आती हैं। जैसे तमिल भी बोल सकते हैं और इसी तरह का हिंदी भी, और राजस्थानी, गुर्जरी, गुजराती, जैसे बेटी ये बंग बोलती है वो भी, सबका आ जाता है। और यही हमारा जो इस राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का यही हमारा लक्ष्य है। आपका सदा स्वागत है। माने आप आकर के हमारे साथ कुछ काम करेंगे तो हम आगे हाथ बढ़ाएंगे, आप भी बढ़ाइए। और इतने जो एसवी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज से इतने लोग आए, सारे पीजी स्टूडेंट्स आए, और आप भी कुछ करेंगे, हमारा भी करेंगे। आपस में कुछ इसी तरह का जो विषय है
उसमें चर्चा करेंगे। इंटरेक्शन सेशन पूरा हो गया होगा क्योंकि आपने बहुत कुछ समझाया, इन्होंने भी बहुत जिज्ञासाएँ की। जैसे कहते हैं कि माने जैसे प्रेग्नेंट के बाद उसका क्या होता है, ऊम से होता है, बाहर से होता है, कैसे होता है, इस तरह के होते रहते हैं ना। आप सभी नौजवान हैं, नौजवान अपने जो मेडिटेशन कीजिए और इसका पूरा आप अभ्यास करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तभी हमारा होता है क्या समस्या है, उस समस्या का परिहार क्या है, दोनों आप आपस में जानना चाहिए। समस्या ही समझ में नहीं आया, माने कोई नहीं आई तो उसका जो प्रतिकार कैसे करेंगे। और इस तरह का समस्या के बारे में आपने कहा HIV का है, कहाँ से आया, दक्षिण अफ्रीका से आया, दक्षिण अफ्रीकन कंट्रीज से आया, और इसका जो है क्यों हुआ, कोरोना के बारे में भी कहा। इसी तरह का जो है सब कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हमें मनाना चाहिए। इस संदर्भ में आप सबका जो है अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, और ये अवकाश मुझे दिया, आपके लिए बहुत धन्यवाद देते हुए ओम शांति। धन्यवादाः। स्वकीय भाषणे नाम एड्स् विषये किमस्ति इति, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य महत्त्वं किमस्ति इति, अनन्तरम् अन्ये अपि छात्राः यद्यपि भवन्तः वर्तन्ते आधुनिकविभागस्य वैद्यविभागः, ततः भवन्तः अपि अस्माभिः सह आगत्य यदि कार्यं कुर्वन्ति चेत् वयम् इतोपि अग्रे कार्यं कर्तुं शक्यते। इत्येवं रीत्या बहवः विषयाः अत्र उद्बोधिताः, अतः तेषां कृते विशिष्य धन्यवादाः। अधुना समयः वर्तते, ये च मुख्य अतिथयः आगताः अत्र विशिष्य डॉक्टर के सौम्यसुधा महोदय एवमेव रामाञ्जनेयुलु महोदयाः, एतेषां कृते सम्माननं भवति। तत्र प्रथमतया रामाञ्जनेयुलु महोदयः सिविल सर्जन स्विम्स् ये वर्तन्ते, तेषां कृते सम्माननं कुर्वन्ति विश्वविद्यालयस्य अस्य कुलपतयः आचार्यः GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः। सम्मानवस्त्रेण तेषां कृते स्वागतम् एवं सम्माननं च क्रियते। सम्प्रति कुलपतयः सम्प्रति कुलपतयः सम्माननं कृत्वा एड्स् विषये सम्यक्तया उद्बोधनं कृतवन्तः एते आचार्याः, अतः तेषां कृते धन्यवादाः। तर्हि कुलपतीनां कृते अत्यन्त एकं कार्यमस्ति, तस्मात् ते गन्तुमिच्छन्ति। ततः पूर्वं या मुख्यवक्ता अस्ति डॉक्टर के सौम्यसुधा, तस्याः कृते अपि सम्माननं कुर्वन्ति फलैः कुलपतयः। धन्यवादः सर्। वस्तुतः तेषां कार्यमस्ति, अतः ते गच्छन्ति। अधुना कार्यवशात् ते गन्तुमिच्छन्ति, अतः सर्वे अन्ये सर्वे उपविशन्तु। निमेषद्वये वयं कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। प्लीज सिट विथिन् 5 minutes वी विल फिनिश आवर प्रोग्राम। अधुना समयः वर्तते धन्यवाद समर्पणाय। अधुना धन्यवाद समर्पणं कर्तुम् आगच्छति यूनिट 6 इत्यस्य प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर बुल्टीदास महोदय। Thank you, sir. Thank you. On behalf of my National Service Scheme full team, I am here. I want to thank first of all our chief guest, today's World AIDS Day chief guest, Dr. Ramanujacharyalu, Deputy Civil Surgeon of SB Medical College, Tirupati. Thank you, sir,
for your speech, and it is really very important for us, for the especially for our students and youths. Thank you so very much, sir. Then I would like to thank our VC sir, प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति सर, आपको इस मंच से NSS के सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स की तरफ से नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी नेशनल सर्विस स्कीम इस कमिटी की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ आपके कुछ शब्दों को आपने व्यक्त किया है. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर अनदर गेस्ट डॉक्टर K. Soumya Sudha, Assistant Professor, Department of Community Medicine, SB Medical College, Tirupati. Thank you, madam, for your presence here. You really encouraged us. Thank you. Then उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ. हमारे बीच आकर उपस्थित हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की डीन मैडम प्रोफेसर N. लता मैडम. आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारे बीच पहुँची और पूरे कार्यक्रम को हमारे साथ रहकर हमें अपना सपोर्ट बनाए रखने में मदद की है. थैंक यू मैडम. थैंक यू देना चाहती हूँ मैं हमारे हेल्थ सेंटर में जो अहर्निशी काम करते रहते हैं, हमारे स्टूडेंट, हमारे स्टाफ्स, सभी के लिए जो हर समय तैनात रहते हैं, हमारे बीच पहुँचे हैं डॉक्टर बाला दत्तात्रेय सर. आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद की है. थैंक यू डॉक्टर श्वेता मैडम. इस कार्यक्रम में पहुंचकर एवं हम सबके साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आपने सक्सेसफुल बनाया. थैंक यू. थैंक यू देना चाहती हूँ हमारे बीच आकर पहुंची थी हमारी साहित्य विभाग की संकाय प्रमुख प्रोफेसर ललिता रानी मैडम. आपको हार्दिक धन्यवाद कि आप अपना व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर हमारे समक्ष आकर पहुंची है. थैंक यू देना चाहती हूँ मैं हमारे एसबी मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स को जिन्होंने अहर्निशी कोरोना टाइम से लेकर, मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम कोरोना में ही डॉक्टर की महत्वता क्या होती है, नर्सेज की महत्वता क्या होती है, उसको हम जान पाए. आप सबका कोरोना टाइम से लेकर मैं आज इस मंच से नेशनल सर्विस स्कीम के तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ. आज भी आपने अपना टाइम निकालकर इस कार्यक्रम को, हमारे रैली और आज के प्रोग्राम को आपने सफल बनाया. थैंक यू. एंड थैंक यू हमारे सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स को, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7. आई थिंक सेतु सर नहीं है इस मंच से. आपका भी धन्यवाद क्योंकि आपके वॉलंटियर्स हमारे साथ थे. उसके बाद थैंक यू हमारे सभी क्या मैं बोलूँ, हमारे स्टूडेंट के लिए जो अहर्निशी काम करते हैं. कल रात को 10:30 तक इस कार्यक्रम के लिए हमारे प्रोग्राम ऑफिसर अदेना सर और कुमार सर के साथ वो लोग काम किए हैं. सबका धन्यवाद. और जो आज हमारे आज के रैली में पहुंचे हैं, सुबह से लेकर काम कर रहे हैं, आप सबका, लड़कियों को, लड़कों को इस मंच से धन्यवाद देती हूँ. आप लोगों के सहयोग के बिना ये रैली, ये कार्यक्रम कदापि संभव नहीं होता. थैंक यू श्रीकांत, थैंक यू चेतन एंड टीम, थैंक यू के सुजानी मैडम फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट. थैंक यू. सर्वेषां कृते धन्यवादसमर्पणं कृतवती अस्माकं यूनिट 6 इत्यस्य अध्यापिका डॉक्टर बुल्टिदास महोदय, तस्याः कृते अपि धन्यवादाः. एस्पेशली अत्र सर्वेषां नाम एस्पेशली हेल्थ डिपार्ट्मेंट and teaching department